Hello students. Respiration, new lesson. It is exactly opposite of the lesson photosynthesis. What we have discussed in photosynthesis, that it is energy trapping process. Sunlight is trapped with the help of pigments. Sunlight is used for the process of formation of ATP and NADPH assimilatory power that is used in dark reaction. And in dark reaction, the ATP NADPH energy as well as hydrogen is added in CO2 to form glucose. So you must be remembering all these points which we have discussed in photosynthesis. So the energy transformation in photosynthesis is like A to Z. Okay? If you imagine photosynthesis lesson is A to Z, then the respiration is Z to A. Okay? So we'll refer respiration as well as photosynthesis. While teaching this lesson, I'll refer you to photosynthesis. And if at all few concepts are missing, अगर आपको photosynthesis में कोई समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसके concepts हमको respiration में clear हो जाएंगे because ये complementary lessons है. Okay? So point number 1, अगर photosynthesis बहुत अच्छे से समझा है, wonderful. नहीं समझा है, तो ये आपके लिए रिवीजन है और कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी, बट समझना बहुत जरूरी है. Okay, this is mark giving area, interesting, bit complicated, logical, okay, plus रट्टा. आप चाहे उतने रिवीजन कर सकते हो और बिल्कुल मार्क्स ला सकते हो. ठीक है? So come to the energy transformation occurring in the process of photosynthesis. So if I am talking about the energy transformation in photosynthesis, then just now what I said, that light energy is collected by photosynthetic pigments. All the accessory photosynthetic pigment give it to reaction center, which is either P700 or P680. This reaction center gives the energy to electron. That energy-rich electron is now moving. This energy-rich electron is following the process of ETS. In ETS, you get two types of energy sources, that is ATP and NADPH, which are a type of chemical energy. This energy is given to dark reaction. This energy is given to dark reaction. And in the process of dark reaction, CO2 enters in and CO2 is reduced. CO2 is reduced by using this hydrogen. ATP is giving energy to form glucose C6H12O6. Right? So this is energy transformation occurring in the process of photosynthesis. So हम यहाँ पर बोलेंगे light energy converted to chemical energy. Light energy converted to chemical energy. Excess amount of glucose can be further stored in form of starch. Excess amount of energy मतलब ग्लूकोज अगर अवेलेबल है प्लांट को चाहिए तो रेडिली वो एटीपी देने के लिए फिर से रेस्पिरेशन में उतर जाएगा. अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्लूकोज सेल के अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो वो स्टोर्ड फूड फॉर्म में जाएगा. इफ इट इज इन प्लांट, इट इज कन्वर्टेड टू स्टार्च, एंड इफ इट इज एनिमल, द एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड विल बी कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन. याद करो. ओके, सो यहाँ पे आप एक चीज जानते हो, दैट यू नीड एनर्जी for conducting variety of activities, and that energy releasing process is respiration. And in the process of respiration, who is giving you energy? Then these chemicals, right? जो मैं chemical energy की बात की थी, तो ये chemical energy कौन से फॉर्म में है? It is carbohydrates, energy rich chemicals which are acting as food, carbohydrates, fats and proteins. I'll follow this sequence. Carbohydrate, fats
एंड प्रोटीन। देखो मैंने पर्पसफुली कट करके ये सीक्वेंस फिर से लिखा। व्हाई? सी, if your body is having all the three types of energy sources, which is in general language we call it as food. जनरल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? It is nothing but food, right? So when your body is having food which is energy rich organic compound, your body is having food which is energy rich organic compound. The food may be of three types. It may be carbohydrate, fats, protein. Imagine that your body is having all the three type of food in your system. आपके बॉडी में तीनों प्रकार के एनर्जी रिच केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट्स भी है और प्रोटीन्स भी है। तो आपकी बॉडी एट प्रायोरिटी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे फैट्स डिग्रेड करेगी, राइट? और थर्ड प्रायोरिटी पे प्रोटीन्स डिग्रेड होंगे। थर्ड प्रायोरिटी पे प्रोटीन्स डिग्रेड होंगे। सो फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल हेटेरोट्रॉप्स, एंड दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय plants by the process of photosynthesis, and in the process of photosynthesis plants are performing this type of energy transformation, light to ATP and ADPH. ATP and ADPH goes, energy is given to glucose, and excess glucose is stored in the form of starch. Okay, and depending on the plant type, it may be further utilized for the formation of formation of proteins or fats. मतलब अगर मूंगफली का प्लांट है तो उसका स्टोर्ड फूड प्रोटीन्स रहेगा, राइट? या उसमें ऑयल्स रहते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, राइट? ओके, सो पल्सेस है तो स्टोर्ड फूड प्रोटीन होगा, ऑयल सीड्स है तो स्टोर्ड फूड ऑयल रहेगा, बराबर? बट ये जो एनर्जी रिच केमिकल है, carbohydrate, fats or proteins, are prepared by the plant. For that the energy source is coming from light. So food which is synthesized by the plant is using raw material CO2, energy source light, catalytic activities of photosynthetic pigments, and the energy transformation is light energy to chemical energy. Chemical energy में light reaction, अगर ये प्रोसेस को, जैसे आप जानते हो कि यहां से यहां तक ये प्रोसेस को हम लाइट रिएक्शन बोलेंगे। तो लाइट रिएक्शन में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? लाइट एनर्जी टू एटीपी एंड एडीपीएच, व्हिच इज अ केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इन डार्क रिएक्शन एटीपी एंड एडीपीएच एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज further stored in the form of carbohydrate depending on the type of the plant, or in the kingdom Plantae the stored food is always starch. Okay, ये कहानी हो गई टोटल photoautotrophs की। If we are talking about heterotrophs, you and me, okay, how we perform the activity? See, this food, right? This food which is available for the heterotrophs, right? This food is oxidized. Okay, what is oxidation? If respiration is using oxygen, atmospheric oxygen, right? It is aerobic respiration. If it is not used, then it is anaerobic respiration. Okay, so aerobic respiration में food oxidize होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीडाइज होगा, राइट? और ये ऑक्सीडाइज्ड फूड एनर्जी रिच बॉन्ड तोड़ के एटीपी रिलीज करेंगे। एनर्जी रिच बॉन्ड तोड़ के एटीपी बनाने में मदद करेंगे। तो सी व्हाट वी सेड, फूड्स एनर्जी रिच बॉन्ड आर ब्रोकन डाउन, दे आर ऑक्सीडाइज्ड. What I'll say here in this process, what is happening? Energy rich bonds are broken, right? So what will happen in this situation? Energy is released.
right? Obviously, this energy is released by the process of, it is ETS, electron transport system. ये एनर्जी अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉलो करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे अल्टीमेटली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनेगी ATP. यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनेगा ATP. Now this ATP can be used for growth. It can be used for cell division. It can be used for mechanical work. Right? What is mechanical work? It may be related to your muscle power. You are using it for muscle power. It might be used for thinking process. It might be used for other metabolic activities carried out by yourself, carried out by your body. Okay, so see, in respiration, the energy is coming from food. What are the type of food? Carbohydrate, fats, proteins, whatever you eat. It may be even animal fats if you are non-vegetarian, right? So this food is oxidized. It may be aerobic respiration if oxygen is used, or no oxygen if it is anaerobic respiration, right? ये दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ही होगा. कैसे देखते हैं, राइट? एरोबिक प्रोसेस, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसके एनर्जी रिच बॉन्ड टूटेंगे और हाइड्रोजन बाहर आएगा. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. तो इफ आई सेड C6H12O6, इसमें क्या हाइड्रोजन निकल गए. ओके, तो ग्लूकोज ने हाइड्रोजन दे दिया, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ. वो प्रोसेस में जो एनर्जी रिच निकली, वो एनर्जी क्यों निकली? बिकॉज एनर्जी रिच बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन. As energy rich bonds are broken down, the released energy is given to electron, and electron follows the path of ETS, electron transport system, and this ETS is ultimately giving you ATP, adenosine triphosphate, which is a usable form of energy, biological currency. Which is a usable form of energy, biological currency. This ATP can be used for entire metabolism occurring in your body. It may be for general growth, it may be for cell division, preparation of variety of chemicals required for cell division. It may be mechanical work done. It may be for muscle power. It is for metabolism. आप food digest कर रहे हो, okay? आपके visceral organs काम कर रहे हैं, आपका heart का muscle काम कर रहा है, right? So your brain is thinking continuously, and the entire body activities which are conducted in your body are using this energy coming from respiration. Okay, so among this, remember, your brain consumes maximum energy. If it is an animal, if we are talking about animal, then the consumption of energy by the brain is the maximum energy consumption process. So if at all, you might have heard this, the newborn baby is suffocated. Okay, it's not getting enough oxygen. Okay, whatever is the problem during the pregnancy or during the delivery, whatever is the problem, in that situation, if the baby is not getting enough oxygen, then the first organ damaged is brain. Okay, so your brain demands maximum energy. Humans have evolved brains. So energy demand by humans, mammals, is much more than other organisms. Okay, one more thing, animals move. So for locomotion, we require more energy. Okay, if we compare animal with plants, plants require very less amount of energy because they don't move. Point number one. Point number two, they don't have the brain. Okay, उनको अपना वेट उठा के घूमना नहीं है, मसल पावर की जरूरत नहीं है, एक जगह रुकना है, फोटोसिंथेसिस करना है, ग्रोथ करनी है, रिप्रोडक्शन करना है. ओके, एनिमल को मूवमेंट के लिए एंड वन मोर थिंग, ब्रेन के कंजम्पशन के लिए एनर्जी की डिमांड सबसे ज्यादा है. Okay, so this is what is entire energy transformation occurring in the process of photosynthesis
और ये नीचे जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, इट इज अकरिंग इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. प्लीज write down the things. So, as we are comparing the process of respiration in plant and animal, first two basic steps are different. Which are they? You have studied the process of breathing gaseous exchange in 11th for animals. So, what was the first step? Is breathing. Okay. If I am talking about mammals, the diaphragm is straight or getting dome shaped. This change in shape of the diaphragm is causing thoracic cage to expand or thoracic cage to collapse. जैसे thoracic cage expand होगा, तो atmospheric pressure will be more than the thoracic cage. So air obviously diffuses from its higher pressure to its lower pressure. Your lungs will be full of air. Okay, you are lucky enough that you are having fresh air to breathe. Okay, so oxygen-rich air will enter in your lungs. It will diffuse in alveoli. Alveoli will give this oxygen to the blood. Here will be gaseous exchange. Blood will get oxygen, and from the blood, CO2 will come to alveoli. Now, this RBC, which is containing hemoglobin, which is oxygen carrier chemical. This oxygen carrying chemical, hemoglobin plus oxygen, we call it as oxyhemoglobin, will run because of pumping of heart. Okay, देखो याद करो, circulatory system के साथ respiratory system. Because of pumping of heart, it will run. RBC क्यों? RBC का काम है oxygen बांटना. It's not consuming oxygen. RBC is performing anaerobic respiration because it doesn't have the organelle mitochondria, which is site of aerobic respiration. Okay, देखो बॉडी मैकेनिज्म कितना वंडरफुल है. आरबीसी का काम है ऑक्सीजन बांटना, तो उसने खुद ऑक्सीजन खाना नहीं है, राइट? सो खुद ऑक्सीजन कंज्यूम ना करे, उसके पास हीमोग्लोबिन कैरी करने के लिए ज्यादा जगह हो, तो इसने अपना न्यूक्लियस हटा दिया. Nucleus disappear after maturity. It doesn't have mitochondria, so it has abundant space to load the hemoglobin. Hemoglobin is converted to oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin rich RBC will run because of pumping of heart, and itself it is not consuming oxygen because RBC perform anaerobic respiration. Okay, so this is what we have discussed in 11th. Now what happened next? You studied in the 11th is that oxygen-rich RBC run and come in contact with tissue. It comes in contact with tissue, and now there is again diffusion of gases. Oxyhemoglobin will give oxygen to the cell, and the cell will give CO2 to the hemoglobin, right? And it will be now carboxyhemoglobin carrying the CO2 from the cell to the lungs. Now the oxygen is in the cell. To burn what? Food. Cell को food किसने दिया? Obviously blood दिया. Blood is a media in our body. Okay. So what is the job of blood? Is to carry oxygen, hormones, chemical, waste, CO2, O2, right? So everything is like connective tissue connecting all the things in our body. So blood ने हर सेल को फूड दिया, हर सेल को ऑक्सीजन दिया. And now within a cell, the respiration starts. This is what is cellular respiration, and this lesson, which is actually common for plants as well as animal. So ये chapter को मैं zoology का chapter भी बोल सकती हूँ. Okay, so cellular respiration is common in plant cell, animal cell, yeast, fungus, microorganism, and you will discuss in detail in any branch of biology. Pharmac में जाओ, कौन से भी मेडिसिन होम्योपैथ रहे, ओके, आपका इवन इट मे बी इवन अ ट्रेनर, ओके, जो प्लेयर्स को करता है, एवरीवेयर दे टॉक अबाउट हाउ टू रेस्पायरेट, हाउ टू ब्रीद इन, ओके, वो पूरे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज एंड ऑल, इट इज ऑल रिलेटेड टू दिस. सो दिस इज अगेन अ लेसन ऑफ zoology. Okay, cellular respiration, which is common in plant as well as animal, right? Okay, so
Let us have introduction of the topic. We are on page number 226. Please take out NCERT. 226, respiration in plant. Okay, यहाँ पे लिख लो oblique करके animals. Same process occur in animal cells. Cellular respiration is common in plant cell and animal cell. It starts, if I'm talking about aerobic respiration, देखो last year chapter cell में हमने mitochondria का structure देखा था. Mitochondria is site of aerobic respiration, which is present in animal cell, plant cell, fungal cell, and all eukaryotic, which are aerobic organisms, have mitochondria. Okay, aerobic respiration perform 3 steps: glycolysis, TCA, and ETS. Glycolysis occur in cell cytoplasm. ETS and TCA occur in the mitochondria. So these 3 steps are common in plant cell and animal cell. So we'll discuss in detail कि ये process plant cell में कैसी होती है, animal cell में कैसे होती है, कितने ATP बनते हैं और क्या-क्या उनमें थोड़ा सा जो बदलाव है वो भी है. So this is a lesson which is common for plant as well as animal and very important for you MBBS. Right? So it is total physiology part. Okay, see. All of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? Okay, breathing रुक गया, life गया. Right? If someone is suffocated, the life will end within few seconds. So oxygen, breathing, respiration is very essential and performed by all living cells 24/7. Okay, so breathing is so essential for life. What happens when we breathe? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? If so, how? ये जो breathing की process है कैसे होती है? अभी मैंने animal की समझाई. Your diaphragm is becoming dome shaped and strapped. This change in shape of the diaphragm is causing change in thoracic cage, and accordingly the gases diffuse. It is happening in animal. If it is a plant, then lenticels present on woody plant part are exchanging gases for respiration, and CO2 is given out, O2 is taken in. But stomata, which are open during day for photosynthesis and closed during night, लेकिन रात को स्टोमेटा बंद होने के बावजूद रेस्पिरेशन चल ही रहा है. All living cells respire 24/7. So remember, in night, green leaf cells, all living plant cells respire. All living plant cells respire day as well as night, 24/7. 24 घंटे, पूरे हफ्ते के 7 दिन प्लांट के लिविंग सेल रेस्पिरेशन करेंगे. कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में. क्या बनाएंगे? एटीपी. सेम थिंग ट्रू फॉर एनिमल सेल. एनिमल सेल 24/7 रेस्पायर व्हेन इट इज अ लिविंग सेल. अब आप बोलेंगे डेड सेल क्या है? योर नेल्स आर डेड सेल, योर हेयर्स आर डेड. हेयर का फॉलिकल नीचे का जिंदा है, ऊपर का डेड है. Right? Okay, so all living plant cell, animal cell respire 24/7, may be performing aerobic respiration or anaerobic respiration so as to release energy, and energy is given out in form of ATP. In animal, the first step is of breathing, and in plant is gaseous exchange through lenticel or even closed stomata. रात को stomata बंद है, लेकिन closed stomata से भी उतना ऑक्सीजन जाएगा जो respiration के लिए जरूरी है. Right? So stomatal opening closing is no way related to the process of respiration. Oxygen needed for respiration can go through closed stomata even, and the process will continue. Okay, so see now. All living organisms need energy for carrying out daily life activities. It may be absorption, transportation, movement, reproduction. So here what I wrote, ATP's energy is used for metabolism. So metabolism is all these. Okay, it is absorption, transportation, movement, reproduction or even breathing. आप डायफ्राम हिलाते हो तो उसके लिए मसल यूज होते हैं. मसल को एनर्जी कौन देता है? एटीपी देता है. एटीपी कहाँ से आया? ये पूरा जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा, ये प्रोसेस कौन सा है? रेस्पिरेशन. सो मसल पावर is also requiring energy coming by the process of respiration. See, where does all this energy come from? We know we eat food for energy, but how is the energy taken from the food?
हाँ, आपने फूड खा लिया, लेकिन फूड से एनर्जी बाहर आई कैसे, आपने एटीपी बनाया कैसे, ये पूरा प्रोसेस हम रेस्पिरेशन में सीखेंगे. हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? डू ऑल फूड हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? जस्ट नाउ वी सेड carbohydrate, fat, protein are the three types of food. So does they have same amount of energy per gram? No. So energy content also differ. Do plants eat? Plant खाते हैं क्या? प्लांट बाहर से फूड नहीं खाते. प्लांट CO2 वाटर अंदर लेके खुद का फूड अंदर बना के उसी को अंदर स्टोर करके जब चाहिए तब खाते हैं. Right? Okay. So plant use CO2 water, which is raw material for preparation of food. The food for plant is carbohydrate, fat, protein, which is product of photosynthesis and is stored in godowns. So plant में गोडाउन क्या क्या है? सीड में एंडोस्पर्म है, सीड में कॉटिलडॉन है, फ्लेशी लीव्स है, पोटैटो ट्यूबर है, राइट? ओके. देन फ्रूट है, बट फ्रूट में जो फूड होता है वो हेट्रोटॉप्स के लिए रिश्वत है, मॉर्फोलॉजी में सीखा आपने. एंजियोस्पर्म वांट सीड डिस्पर्सल. सो सीड डिस्पर्स करने के लिए ममा प्लांट ने व्हीकल अरेंज किया. व्हाट वाज दैट? सीड. तो सीड क्या करेगी? सीड के ऊपर कवरिंग है फ्रूट का, उसको एडिबल करा दो तो हेट्रोट्रॉप्स वो फ्रूट खाने के लिए जाएंगे और सीड डिस्पर्स करेंगे. सो प्लांट इज अ वंडरफुल प्रोसेस. प्लांट की अगर लाइफ प्रोसेस आप देखेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, हाउ अडेप्टिव दे आर, एंड दे हैव कंटिन्यूअस ability of evolution, so they can grow anywhere efficiently. Okay, so bottom line, cellular respiration, plant respiration is same. Plants prepare their own food and the food is eaten up by them. Energy is released and that energy is utilized for the process of metabolism. For their energy requirement, do they eat food? They prepare their food and consume it. You may wonder at several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but it is really the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try to understand how it happens. Respiration कैसा होता है? Let us see. All the energy required for life process is obtained by oxidation of some macromolecule that we all call food. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. All green plant parts are photosautotrophs and cyanobacteria are photoautotrophs. We have discussed it in biological classification. By this process of photosynthesis, they trap light energy and convert it into chemical energy. Light energy is converted to chemical energy that is stored in the form of bonds of carbohydrate. ये बॉन्ड एनर्जी केमिकल में जो अभी हमने बोला था कि एनर्जी रिच बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिच बॉन्ड बनता है. एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके उनकी एनर्जी यूज करके एनर्जी रिच बॉन्ड बनता है. वो एनर्जी रिच बॉन्ड फूड में है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज विच इज अ मोनोसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डायसैकेराइड एंड स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड. So immediate product of photosynthesis, glucose. Glucose is transported in form of sucrose and it is stored in form of starch in plants. We must remember that in green plant too, not all cell, tissue and organ photosynthesizes. Okay, plant में सबके सब living cell photosynthesis नहीं करते. Only cell containing chloroplast that are most often located in the superficial layers carry out photosynthesis. Why superficial area? क्योंकि sunlight जहाँ पे available है उसी पे photosynthesis होगा. Deep inside tissue doesn't have any sunlight, so it won't have any chloroplast. So superficial cellular layer which is getting sunlight will perform the process of photosynthesis. Hence, even in green plant, all other organ, tissue and cell that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to non-green plant part. लीफ में फूड बनेगा, सुक्रोज के फॉर्म में नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. वहां पर जितना चाहिए उतना यूज होगा, जो बचेगा वो गोडाउन में जाके स्टोर होगा. व्हाट आर द गोडाउन?
It may be fleshy leaf, fleshy stem, it may be fruit, it may be endosperm of the seed, right? So seed food होगा, store होगा कहाँ पे? As I said, fruit, फिर endosperm of the seed, it may be fleshy stem, fleshy root, right? And it may be in other succulent leaf-like structures. So food is stored. Hence, even in green plants, all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation. जैसे adaptability है, लीफ फोटोसिंथेसिस करेंगे, रूट वाटर सक करेंगे, स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करेंगे, स्टेम सपोर्ट देगा, कॉम्प्लीमेंट्री ना, सब ऑर्गन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, सपोर्टिव है, अपने अपने क्षमता के अनुसार काम करते हैं, बट कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल प्लांट बनाते हैं जो कंप्लीटली फिट ऑर्गेनिज्म है. Animals are heterotrophs, that is, they contain food from animal. So plant require ready-made food. Plant prepare food, animal require ready-made food, that's why we are heterotrophs. Animals are heterotrophs, that is, they obtain food from plant directly herbivore or indirectly carnivore. अगर आप डायरेक्टली प्लांट खाते हो तो आप हर्बीवोर है, अगर आप प्लांट को खाने वाली मुर्गी खाते हो तो आप इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है, राइट? Saprophyte like fungi are dependent on dead and decaying organic matter. एनिमल के प्लांट जो भी मर गया उसके सेल में जो एनर्जी है उसको डेड टिश्यू के केमिकल को डाइजेस्ट करके फूड बना, अपना एटीपी बनाने वाला, डेड टिश्यू को फूड बना के खुद के एटीपी बनाने वाला ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइट. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. Entire food product is coming from photosynthesis. This chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breaking of this energy for synthesis of ATP. How this energy, फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे ऑक्सीडाइज करके एनर्जी एटीपी बनाने में रिलीज होती है. सो विल डिस्कस दिस ऑक्सीडेशन, ETS and formation of ATP. Photosynthesis of course takes place within the chloroplast in eukaryote, wherein breakdown of complex molecule to yield takes place in cytoplasm or in mitochondria. If it is a eukaryotic cell, aerobic respiration starts in cytoplasm and completed in mitochondria. The breaking of the CC bonds of complex compounds through oxidation within the cells, leading to release of carbohydrates through oxidation within the cell. कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उनसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एनर्जी रिच बॉन्ड टूटेगा, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी रिच बॉन्ड जो टूटने के बाद एटीपी बनाएंगे. The compound that are oxidized during the process are known as respiratory substrate. Okay, जो कंपाउंड का, जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है. हमने प्रायोरिटी भी देख ली, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. Usually carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats are even organic acids can be used as respiratory substrate in some plant. ये सब केमिकल प्लांट के पास होते हैं लेकिन प्रायोरिटी अलग है. At high priority carbohydrate, second fat, third protein. Right? This is what is priority wise the food is oxidized and ATP are synthesized. See, usually carbohydrates are oxidized to release energy, but protein, fat, even organic acid can be used as respiratory substrate in some plants under certain conditions. Due to oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into a cell, or it is a single step. It is released in a series of low stepwise reaction controlled by enzyme. ये जो ETS है, you know, electron transport system, cyclic, non-cyclic, energy is released in a stepwise manner and the sufficient energy is used for trapping preparing ATP. Okay, so this is what they just wrote in one line. During oxidation within the cell, all energy contained in respiratory substrate is not released. ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरीज एनर्जी है, 686, लेकिन उसमें से सिर्फ
292 इतनी कम एनर्जी एटीपी बनाने में यूज होती है, बाकी सब एनर्जी हीट एनर्जी बोल के लॉस होती है. So it's not that entire energy present in food is used for glucose formation, food formation. It may be wasted or it may be used some for other activities. During oxidation within a cell, all the energy contained in the respiratory substrate is not released free into a cell or in single enzyme, and it is trapped as a chemical energy in the form of ATP. ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो एटीपी के फॉर्म में ट्रैप हो जाएगी. Hence, it is important to understand that the energy released by the oxidation in respiration is not, or rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and what energy is required. जहाँ पे भी कभी भी जब भी आपको एनर्जी लगे तो फूड को ऑक्सीडाइज करके आप एटीपी बनाओगे. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of organism. ये एनर्जी हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटीज करने के लिए लगेगी. एंड द कार्बन सिलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल. रेस्पिरेशन में आप जो भी केमिकल बनाते हो वो रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स, व्हाट आर दे कॉल्ड? रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स. These respiratory intermediates will be again converted to chemical, and because of their experience and all, it will work nicely as a food. Got it? Okay, so this is totally introduction of plant respiration and animal respiration. So, do plants breathe? Breathing, as we say, is a physical process in which the atmospheric oxygen, atmospheric air is taken in, and oxygen is used for burning of food. But as we said, in animal, the process of respiration involves 3 steps: breathing, tissue respiration, cellular respiration. अब एनिमल में ये होता है, ये आप जानते हो. ओके, सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्लांट और एनिमल का सेम है, जो ये चैप्टर में सीखेंगे. सो इट इज अ लेसन ऑफ बॉटनी एज वेल एज zoology. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन प्लांट is gaseous exchange is occurring through either stomata, lenticels, and it merely diffuses. Okay, अब अच्छे से कंपेयर करो. See, you know respiratory system in cockroach, respiratory system in mammals. Even you have discussed all these points related to respiration. In unicellular organism, respiration occur with the help of plasma membrane. Right? Then in aquatic plant, animals, it occurs through gills. In amphibians, it occurs through skin. And in other evolved organism, we are having windpipe. ठीक है, लेकिन अब कॉकरोच के पास भी windpipe है, जिसमें बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन अलग होगा और windpipe अलग रहेंगे. एनिमल्स में, particularly mammals में, what we know that we have only one circulatory system, which is having a body fluid. Okay, and body fluid is carrying all the needful things. It may be CO2, it may be O2, it may be even temperature. Okay, it may be hormone, it may be excreta, it may be waste material. So all that is transported via blood. And one more thing you have studied in humans is lymphatic system. Right? Okay, so which is mainly dealing with your resistance to pathogen and collection of lymph in our body. ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कुलेशन है इसमें गैसेस का सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गैसेस आर गिविंग ऑक्सीजन फॉर बर्निंग द फूड. अच्छे से समझो, आपके बॉडी में फूड भी है, आपने खाना भी खाया, आपके पास ब्लड भी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो फूड को जला के आप एटीपी नहीं बना पाओगे. तो धीरे 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 सेल्स मरने लगेंगे, और सबसे पहले डैमेज कॉजिंग ऑर्गन जिसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से डैमेज होता है, दैट इज योर ब्रेन. अंडरस्टूड? राइट. सो ऑक्सीजन इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड. ओके, तो एनिमल्स में इस तरह से होता है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है. तो प्लांट्स में क्या होता है? यू नो, एरियल प्लांट पार्ट इज इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विथ एयर, and even root system is in contact with air because porous soil is healthy for the plant. If your soil is waterlogged, then the roots are not getting oxygen, and if anaerobic respiration is there, the efficiency of the plant drops.
Okay, so what is other one? What is other thing you have studied in morphology? Is nematophores. Okay, so nematophores are the breathing roots. What are nematophores? Breathing roots. Because these plants, which we call mangrove plants, are having respiratory roots, and normal roots are in the soil, which are for absorption of water and for support. अब इनके breathing root air में क्यों आए? Nematophores are positively phototropic, negatively geotropic. Okay, why so? Because water-logged soil में gases नहीं है, तो respiration के लिए दिक्कत होगी. तो plants ने अलग से breathing roots ही बना लिए, nematophores बना लिए. समझ रहे हो? So respiration is one of the important thing, and plant organ are in directly contact with the air, and the air is diffusing in, merely diffusing in, with the help of stomata, lenticels. Lenticels are present on woody plant part, even they are present on nematophores. Gases diffuse in. Okay, अब देखो anatomy याद करो. Lenticels से stomata से gases अंदर गए, इंटरसेल्युलर स्पेसेस में gases diffuse हुए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर गए, राइट, और वहां पे ऑक्सीजन ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया. ओके, सो प्लांट्स में ये डिफ्यूजन जो एक्चुअली बहुत स्लो है, डिफ्यूजन इन प्लांट्स इज वेरी स्लो, रादर डिफ्यूजन प्रोसेस इज स्लो. इट इज नॉट गिविंग सफिशिएंट ऑक्सीजन टू जनरेट द अमाउंट ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड. ओके, सो जस्ट इमेजिन करो, अगर आपको डिफ्यूजन द्वारा एनिमल्स आपके जैसे, ओके, हमारे जैसे मैमल्स को डिफ्यूजन द्वारा रेस्पिरेशन करना पड़ता था, तो हमारे बॉडी को कौन सा अडेप्टेशन चाहिए होता? एज आई टोल्ड यू, बिकॉज एनिमल्स हैव ब्रेन एंड लोकोमोशन. ओके, वेट लेके घूमते हैं लोग, तो 100 kg लेके घूमते हो तो कितना मसल पावर लगता है. ओके, सो फॉर दैट योर एटीपी डिमांड इज मोर, फॉर मूवमेंट एटीपी डिमांड इज मोर. एंड वन मोर थिंग, ब्रेन कंज्यूम्स मैक्सिमम एनर्जी. पढ़ते हो तो देखो ऐसे फटीग आता है, आराम से एसी में बैठे हो, लैपटॉप के सामने बैठे हो, राइट, फिर भी 2 घंटा 3 घंटा अगर टीचर लोगों ने ब्रेन खा लिया तो कैसे एग्जॉस्टेड फील करते हो, बिकॉज योर ब्रेन रिक्वायर मैक्सिमम एटीपी. समझ रहे हो ना? तो उसके लिए एटीपी अगर इफिशिएंटली बनाना है तो ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए. ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा चाहिए तो डिफ्यूजन का रेट ज्यादा चाहिए. डिफ्यूजन का रेट ज्यादा चाहिए तो डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया चाहिए. Okay, you must be knowing that your lungs are having, lungs के पूरे alveoli का अगर सरफेस एरिया निकाला तो सरफेस एरिया लॉन टेनिस के कोर्ट जितना है. कैन यू इमेजिन? कभी खड़े हो लॉन टेनिस के कोर्ट पे खड़े रह के देखना, ओके, इतना बड़ा कोर्ट होता है. सो व्हेन यू ब्रीथ इन, लॉन टेनिस के कोर्ट के सरफेस से एयर कैपिलरीज में जाती है, एंड व्हेन यू एक्सहेल आउट उतने ही सरफेस एरिया से CO2 ब्लड में आता है. So, because of this huge surface area, the availability of oxygen because of lungs is fulfilled. अगर लंग नहीं होते थे, हमको अगर प्लांट जैसा रेस्पिरेशन करना पड़ता था सरफेस द्वारा, तो वो कंडीशन में हमको ऐसे डिवाइस बनाने पड़ते थे जो लॉन टेनिस के कोर्ट जितने हो और उसमें से एयर फिल्टर हो. Okay, just imagine you are sitting here in the classroom, 100 students are there with 100 tennis court, okay, allowing gaseous exchange. Is it practically possible? No. Okay, so this is how animals' energy demand, ATP demand is much higher than plant. Okay, और एक बात एनाटॉमी में सीखी है हमने, प्लांट के पास डेड टिश्यू भरे पड़े हैं. ओके, डेड टिश्यू बहुत है प्लांट के पास. डेड टिश्यू प्लांट के लिए काम करते रहते हैं, डेड टिश्यू प्लांट के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन उनको एटीपी एनर्जी फूड नहीं लगता. Isn't it good for plant? हमारे पास डेड टिश्यू नहीं है, बिकॉज अगर डेड टिश्यू एक्यूमुलेट करेंगे तो दिन ब दिन वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ेगा तो मूवमेंट के लिए प्रॉब्लम होगा. ओके, सो रिमेंबर, प्लांट्स डोंट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्लांट डोंट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके पास वैक्यूल्स है. प्लांट डोंट हैव skeletal system, they have only xylem phloem, and each cell has cell wall. समझ रहे हो? each cell has cell wall, so mechanical strength आ जाएगा. Understood, right? So this is how plant and animal system differ with respect to the process of respiration and other mechanisms. Okay, so plant में जो plant part air के contact में है, all the plant part which are in contact with air,
allow diffusion of gases through intercellular gaps, the gases diffusion, and that is sufficient for respiration. So देखो epidermis, cortex, endodermis, pericycle, phloem, cambium, xylem, pith, यहाँ तक पूरे gases diffuse होंगे जो हमने anatomy में देखा. Okay, so intercellular gaps यहाँ पे मदद करेंगी, living cells यहाँ पे मदद करेंगे. Right? This is regarding breathing in plant. Okay, cockroach जैसे animal में windpipe अलग रहेंगे. Unicellular organism में plasma membrane रहेगा. और evolved organism में gills and then lungs द्वारा respiration होगा. Right? Okay. So this is comparison between breathing of plant and animal. So this is all given in a similar way in NCERT. So we are on page number 227. Do plants breathe? Well, the answer to this question is not quite so direct. Okay. हमारे बॉडी में जैसे दिखता है, you breathe in, you breathe out, ऐसे प्लांट पे नहीं दिखेगा. स्लोली डिफ्यूजन चलता रहता है, क्वाइटली चलता रहता है. Okay, so it is there, but not clearly visible. So it is not quite so direct. Okay, so इतना clear breathing हमको प्लांट में नहीं दिखता. Yes, plant require O2 for respiration to occur, and they also give out CO2. Plants do respire. All living cells respire 24/7, except dormant cells. Okay, अब dormant से क्या होती है, प्लांट ग्रोथ में देखेंगे. लेकिन व्हाट इज अ डॉर्मेंट सीड? आप जो घर में सीड्स लाके रखते हो ना, गहूं, जवार, बाजरी खाने के लिए लाके रखते हो ना, दीज आर द सीड्स व्हिच आर लिविंग. अगर आप उठा के जमीन पे डालते हो तो दे हैव एबिलिटी टू जर्मिनेट, मींस इट इज लिविंग बट रेस्पायरिंग negligible. Okay, so what I said, all living cells respire 24/7 except dormant cells. Okay, see now. Hence, plants have system in place that ensures the availability of oxygen. Plants, unlike animal, have no specialized organ for gaseous exchange. Animal के पास specialized organ है. ये देखो पूरा आप nose, nostrils, then trachea, then bronchi, lungs, alveoli पूरा सीख चुके हो. Okay, so that is what is there in animals, but it is not so in plants. Just stomata, lenticels है, और बाकी जो मैंने लेयर बोले epidermis, cortex, endodermis, इसके द्वारा एयर डिफ्यूज होंगे. There are several reasons why plant can get along without respiratory organs. Okay, different reasons why plant don't have evolved respiratory system, because non-motile, don't have nervous coordination, don't have brain, all living cells number is less, their energy demand is less. Okay, so special respiratory system होने की उनको जरूरत नहीं है. First, each plant part take care of its own gaseous exchange needs. ये सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो हवा से ले लेगा, ये सेल को चाहिए ये ले लेगा. हमारे पास ऐसा नहीं है. Your skin is exposed to air, but it's not taking gases from air. Your lung is providing it with the help of circulatory system, that is blood. Okay, see, there is very little transport of gases from one plant part to other. Second, plants do not present great demand for gaseous exchange. Roots, stem, leaves respire at rates far lower than animals do. Rate of respiration in plant organ is very low as compared to animals. Only during photosynthesis, large volume of gases are exchanged. Photosynthesis में जब स्टोमेटा खुलते हैं तो ample amount of gases enter in and CO2 participate in the photosynthesis. When cells photosynthesize, availability of O2 is not a problem in these cells since oxygen is released within the cells. Distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great. देखिए प्लांट कितना भी बड़ा रहे तो रूट से ऊपर या ऊपर से नीचे गैसेस नहीं आते. वही के वही. ओके, बिकॉज एरियल प्लांट पार्ट इज देयर. ओके, सॉइल में भी जो पोरस सॉइल होती है वहां से रूट गैसेस ले लेंगे. सो गैसेस डोंट ट्रैवल मच डिस्टेंस इन प्लांट. Each living cell in plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaves. You may ask, but what about thick woody stem and root?
In stem, living cells are organized in a thin layers inside and breathe the bark. Bark पे जो lenticels होते हैं उसके द्वारा breathing होता है. They also have opening called lenticels. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. Heartwood. Okay, जैसे diameter बढ़ेगा तो centrally located pith मर जाता है और secondary xylem जो center core बनता है heartwood is dead, so it doesn't require oxygen, right? They also have opening called lenticels. The cells in the interior are dead and provide only mechanical support. For example, bark. For example, heartwood. Thus, most of the cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. This is also facilitated by loose packaging of parenchyma cells in the leaves. Okay, leaves में देखो parenchyma cells है, they are loosely packed, allowing easy gaseous diffusion. Leaves, stem and roots which provide an interconnected network of air spaces. Okay, because of leaves arrangement of parenchyma, air spaces are in connection with each other and air can diffuse it. The complete combustion of glucose which produce CO2 and water as end products which yields energy, most of which is given out as heat. Okay, so ये heat को underline करो और most को underline करो. This is now cellular respiration जो अब हम शुरू करेंगे. Okay, so I repeat, complete combustion of glucose. What is combustion? जिनको नहीं समझ में आ रहा है लिख लो burning. Complete combustion of glucose which produce CO2 and water as end product yields energy. Okay, ये respiration की process है जिसमें ग्लूकोज जलता है, combustion होता है, energy release होती है और energy release दो form में होती है. ग्लूकोज की एनर्जी दो फॉर्म में रिलीज होती है. वन इज हीट एंड अदर इज एटीपी. इसमें से ज्यादा क्या है? मोस्ट ऑफ द रिलीज्ड एनर्जी इज हीट. सो हाउ दिस सेल्युलर रेस्पिरेशन occurs we'll see in detail, which is common in plants as well as animals.